with functions. So in this, we will talk about naming a cell, uh, how to use named cells in different sheets and all those things, and what do we get with named cells. Also, we will start with functions like common functions like sum, product, also string functions, and then we will do numeric functions. And let's see till where we can go today. Okay. Today, I would need you all to open the Excel sheets and start creating some data on your own, like basic data, and start doing hands-on with me. Is that fine with everybody? Is everybody having Excel in their PC or anything like that? Yeah, Niyar, we are having it. Yes. So it's better that you guys don't be on mute. We will have a open discussion. You guys can talk with me anytime you want. And whenever you are not talking, then maybe that time you can stay on mute. But Yeah, chalega. it's better that everybody keeps on sharing their views and whatever it is. Okay, so create a if possible, create. I will start with this freeze pans. So freezing the pans is very important when you have large data like this. So what do we mean by freezing the pans is basically whenever you scroll down, suppose now you don't remember the exact column name of each of these values. So what happens is when you scroll down and you see this value, you don't know whether it is B3, B2, B4, B12. Now I have named it as B1, B2, but suppose there is something called rice, tea, coffee, and you have grocery data like that. So it is very difficult for you to exactly remember which column is named as maybe rice or maybe sugar, and if you want uh, their value in batches or something like that. But for that reason, when there is such huge data, what happens is you can actually freeze the columns and the rows as well. So what happens when you scroll down, that column will remain on top of the values. So this will help you guys to exactly figure out which column and which value you are trying to achieve. So in that case, you need to first go to view tab, and in this view tab, here you will find freeze pans. You can see here what it says: freeze a portion of the sheet to keep it visible while you scroll through the rest of the sheet. This is useful for checking out data in other parts of your worksheet without losing your headers or labels. So that is what I said. It is nice to have your labels and headers when you are actually searching and looking for some data in the entire worksheet. So now I will show you how to do that. You just click on the freeze tab, freeze panes command, and here you can see you can freeze top row. What happens is when you freeze this top row, whenever you scroll down, this top row remains like that. It doesn't change. So you go down, you come up, and then whenever you are here, you can see that this is B6 ka value, this is B14 ka value. Similarly, when it goes, you can check like that, and the top row is freezed. Now, similarly, you can unfreeze the pans, and for that, whenever you unfreeze, now you can see that the row is not in the frozen state. You can again do that. So similarly, you can freeze first column. What happens is when you freeze the first column, when you scroll towards your right side, the first column will stay as it is. What happens is generally why this option of top row and first column, because generally people when they create data, they keep their labels and headers generally in the first row and first column. You name you create tables in that way, because that is the way you create data, and that makes relevant data and makes sense that first row and first column has the labels and headers. So in that way, if you can see now, when you
freeze the first column, you can see that it is like in the static position, and rest all you can move. इससे क्या होता है? इससे you will not forget what exactly the value is here, this value represents. You can unfreeze the panes and you can see that it is moving now. Now it becomes very confusing for you to exactly know which batch number is this for B16 column. So that is what it is. So this is about freezing the data. Similarly, you can use this command called split. What happens is when you use command split, you can actually freeze both the labels and headers. You can drag and drop this lines here and then go here and say freeze panes. What happens is now whenever you are scrolling, the top column, the top row is also frozen, as well as when you move this, the first row is also frozen. So what happens is the lines which we drag and drop on the places where we did right now, that helps you to keep the rows and columns beside that line frozen. So when you remove the split, I'll show you the split command again. It is very important to know. So if you keep it here, and if you keep this line here, suppose, and now you say freeze panes, what happens is that things remain, like the first three columns are in the frozen state, as well as when you scroll up and down, the first three rows are also in the frozen state. So the lines which are there, those lines help you freeze the the placement of those lines which we drag and drop helps you to freeze the particular number of rows and number of columns, which will help you to trap, to like log the data and get the columns and rows ka header freezed. Now I will remove that split and I will just again repeat the first thing. When you freeze the first column, what happens is whenever you freeze the first column, you can see that whenever you move towards your right or left, the first column doesn't move. Similarly, when you click on freeze top row, it will just freeze top row. It will just freeze the top row. And whenever you move down, you won't, this first row doesn't go away. So that is how it is. You can unfreeze the pans and then split. As I showed you, it is used to divide the window into different pans that each scroll separately. As I told you, I will again repeat, this is very important. When you drop this wherever you want, that will freeze the column, that will freeze the row above that line. And whenever you drag and drop this line to the to any of the columns, it will freeze the left side of the column apart from that line. So, and then you have to click on freeze panes. What happens is you just, whenever you scroll, the header doesn't move, and whenever you scroll here, the column doesn't move. Okay, I'm clear. Yes, Nihar, clear है. Split can be used only once in a sheet, or we can use multiple times. It can be used only once. Okay. Yes, it can be only used once because it will create confusion, and it is recommended that you use it only once because it will confuse you, because it is scrollable, right? When if you like control only middle part of the data and then you scroll, it cannot be possible. Okay, so next let's move to naming a cell, naming a range of cells, naming multiple cells, single cells, and formulas that span multiple sheets. Okay, now let's go to, suppose we take some data here itself. Now I will just do it here.
Now this is a, as I click on this cell, you know that the address is shown here, but you can easily name that cell by removing the thing in that. So what you can say is, suppose this is T1, okay, and you click here. Now whenever you let me take a smaller data, because that will be of help, otherwise I will forget which cell I have selected. Okay, let me start with this. Now if we select this and you write here first, okay, and then you write here second, you write here third, sorry, you write here third, okay, and then maybe you select this and you write this as numbers, okay. So now is equal to, let me see if this is, okay. So this, whenever, now this column did not have that nomenclature what I gave it, because the naming did not come to that cell, because I did not press enter. But as you see, when I wrote numbers and when I click enter, what happened is that the naming was fixed on that range. But before, I made a mistake saying that whenever I write the name here, suppose this is sixth, and I press enter. So this cell has this number name now. Whenever I go there, it comes sixth, or whenever and whenever I select this range, it shows numbers here. So what is the help of this? So whenever you do something called sum function now, what we do in sum function, we add all the numbers whatever we mention here. But as I have given the name, range name as numbers, I write sum and I write just numbers here. So you can see it shows the entire range here. The range gets highlighted and it asks whether that is what you are trying to achieve. So you click on this, it will show that the range is this. And whenever you just close the bracket and press enter, it will give you the sum of that entire range. Now similarly, if you remember, I have given, suppose I write, suppose I give this number as second, press enter, then I give this number as fourth and press enter. So what I can do is, I can just write equal to, I can write second. You can see this second here, which has this address, the naming convention here. You click on this, plus you write fourth, and you press enter, you will get the addition of those two particular cells which you have named. So you can even when you go in different cell and you write here, suppose you remember that there is some sheet in which there is a range named numbers, and you want that suppose the maximum value in that particular range of numbers. So what you will do, you will just write max, you write numbers here, even though the sheet is different, okay. You write just the name, the address of that range, you close the bracket, you press enter, you will get the maximum number in that range. If you go back and you check, the maximum number is 310, which is right. So this is how you can span. So have you guys created some data with you right now? Am I audible? No. So please, can you just create a data and try to do this and let me know if you are able to?
I will give you 5 minutes. Try it out, because when you do hands-on, it is very, very important. You will find different kinds of issues, like the bracket, and sometimes you miss the bracket, sometimes you select the range differently, sometimes you are not able to give the naming convention to the particular range. Can you please try with me right now, everybody of you? And if there is an issue, we can solve it right away, the error, or I can show you again the same steps. I will give you 5 minutes, okay? Create some similar kind of uh, range like me, like some small range like this, and just do the functions and let me know. Are you guys able to create some data? Have you performed any operations yet till now? Are you guys creating any data? Yeah. The data is created. Sorry? Data is being created. I'm just functioning it. Yes. Please do that. Yeah, it's working. It's working, right? Yeah. I will just share the screen again. Rest all people, are you able to do it? Hmm. Guys, can you just reply if you can do it? Because everybody of you are on mute, if anybody of you is talking. Yes, done. Okay. Fine. Shall we wait for anybody of you who is trying to do that, or shall we move ahead? Is anybody still performing? अरे एक बार फिर बताइए. कहाँ क्या बताना था आपको, क्या क्या डाउट आ रहा है? मतलब सर व्यू के आगे
कहाँ पे? हेलो, हेलो यस। सर, व्यू के आगे बताइए ना जरा। व्यू के आगे? या फ्री पेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, आस्किंग अबाउट फ्री पेंट्स। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीज पेन्स। जी जी। ओके, सो फ्रीज पेन्स में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये जब व्यू टैब पे जाते हो आप, यहाँ पे हाँ। फ्रीज पेन्स नाम का एक ऑप्शन होगा। जी। उस पे जब आप क्लिक करोगे, यू हाँ। कैन फ्रीज टॉप रो। टॉप रो अगर फ्रीज कर दिया तो व्हाट हैपेंस इज, व्हेनेवर यू स्क्रॉल डाउन, पहला वाला रो फ्रीज हो जाएगा। प्लीज सर। सिमिलरली तुम उसको अनफ्रीज कर सकते हो, देखोगे तो वो वापस हिलने लग जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम तुम फ्रीज कर सकते हो, जब भी तुम राइट लेफ्ट मूव करोगे पहला वाला कॉलम फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। जी और बिल्कुल। सिमिलरली तुम उसे अनफ्रीज कर सकते हो। और एक कमांड है अपने पास स्प्लिट नाम का, हाँ। उससे क्या कर सकते हो आप ये वाली लाइन अगर ऊपर लेके जाके रख दोगे तो उसके वो लाइन के ऊपर वाले सारे रोज फ्रीज हो जाएंगे। और ये वाली लाइन अगर सपोज आप यहाँ मतलब एक जगह पे लाके रखोगे, उसके जी। पहले के लेफ्ट के, उसके लेफ्ट साइड के सारे कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे। बट ये तभी होगा जब तुम ये लाइंस रखने के बाद फ्रीज पेन्स पे फिर से जाओगे। ओके। तो जब तुम स्क्रॉल करोगे आप, तो आपको ये दिखाई देगा कि जब स्क्रॉल कर रहे हो तो ऊपर वाला रो, जो हाँ। रो है वो अटक गया है। और सिमिलरली जब तुम लेफ्ट राइट घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला वाला कॉलम भी फ्रीज हो चुका है। जी। तो ऐसे आप दोनों चीजें एक साथ इसमें कर सकते हो यूजिंग स्प्लिट कमांड, ठीक है। ओके। और फिर अब अगर आपने फिर से स्प्लिट से हटा दिया उसे और देखा तो वापस से आप नॉर्मली घूम रहे हो अपने अपने वर्कशीट में, ठीक है। जी ये सर। स्प्लिट करने के बाद फ्रीज पैन में जाके कमांड को एक्टिवेट करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा, वरना वो फ्रीज नहीं होगा। ओके, हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक ये है। क्लियर है अपना फ्रीज पेन? हाँ जी हाँ। सर। हाँ। अभी आप लोगों ने नेक्स्ट वाला फंक्शंस यूज किया जो मैंने बोला था, नेमिंग सेल्स? Yeah, एक Niyar, बार I have done. यस यस राजा, बट लेट्स सी इफ somebody Yeah. नीलेश, सर, एक बार ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, कि हाँ। चंदन ये आप बोले ना? नहीं, नीलेश ही बोल रहा है। नीलेश अच्छा, बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। वो एक्चुअली कैसे है कि मेरा स्क्रीन शेयर्ड है तो जी, मुझे जी, वो सर। पता नहीं चलता कि कौन बात कर रहा है, तो इस, ठीक है। वो व्यू मैंने गलत सेट कर रखा है, मुझे वो अच्छे से लगाना चाहिए, बट ठीक है। ठीक है नीलेश, हाँ। आपको मैं ये बता देता हूँ वापस से। सपोज अपने पास ये सेल है, जी। अपन ये सेल को नाम दे सकते हैं, लाइक वी कैन नेम द सेल। अभी ये इसको मैं देता हूँ फर्स्ट। अब फर्स्ट देने के बाद अगर मैं ऐसे ही अगर फर्स्ट देके चला गया तो इस चीज का नाम फर्स्ट आएगा नहीं, हम्म, क्योंकि मैंने उसे एंटर नहीं किया। जी। फर्स्ट दबाने के बाद यू शुड प्रेस एंटर, तभी उस सेल का नाम फर्स्ट हो जाएगा। अभी जब तुम वापस से उस पे जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि उसका नाम फर्स्ट है। सिमिलरली अगर मैंने इसको सपोज नाम दिया सेवेंथ और मैंने इसको एंटर किया, तो इसका नाम अगर आप वापस से जाओगे वहां तो उसका नाम दिख जाएगा सेवेंथ। तो जी। इससे अपने को क्या होता है, अगर सपोज मेरे को यहाँ पे एडिशन करना है फर्स्ट और सेवेंथ नंबर का, ठीक है, हम्म, तो अपन जनरली क्या करते हैं, सम दबाते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे करते हैं, फिर हाँ। उसके प्लस करते हैं और फिर ये अपन ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और जी। फिर एंटर करते हैं। तो ऐसे अपन सेल सिलेक्ट करके सम करते रहते हैं। बट वी कैन इवन डू दिस बिकॉज वी हैव गिवन द नेम टू द सेल, कि अपन उनका डायरेक्टली अपने को वहां जाने की जरूरत ही नहीं, अपन डायरेक्टली फर्स्ट दबा दिया अपन ने और कॉमा दबा दिया और डायरेक्टली वहां पे लिख दिया कि अपने को सेवेंथ चाहिए, ठीक है, हाँ। दबाते एंटर कर दिया, अपना डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। ओके सर। इवन सम की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपन ने डायरेक्टली इक्वल टू दबाया और अपन ने फर्स्ट नाम दिया, फिर प्लस किया
और फिर 7th दिया और फिर एंटर दबाया तो वी विल गेट द आंसर। Got it. ठीक है। सिमिलरली वी कैन गिव नेमिंग टू द रेंज एज वेल। ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया, ये रेंज का मैंने नाम दिया था नंबर्स। नंबर। ठीक है। अब सपोज एक शीट में अब ये नाम दिया है मैंने नंबर्स, तो मैं यहाँ गया, मैंने इक्वल टू लिखा, मैंने सम किया एंड मैंने सम में लिखा कि नंबर्स का मेरे को सम करके देना। एंटर दबाया तो मुझे आया ये पूरे नंबर्स का, पूरे रेंज का सम। अगर आपको करेक्ट देखना है ये करेक्ट है या नहीं, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और नीचे अपने को दिख जाएगा कि सम का वैल्यू है 2560, अपन ने किए हुए आंसर का वैल्यू भी है 2560। और ठीक सर है। रो में भी दिखेगा क्या इसे? हाँ, रो में भी होगा। हाँ। अगर हाँ, रो में भी होगा। अगर आपको यहाँ पे 10, 20, 30, 3, फिर 50, 860 ऐसे लिखा है सपोज, मैंने हाँ। ये पूरे रो को यहाँ पे जाके नाम दे दिया। सपोज क्या दूं अभी मैं इसको, टोटल। ठीक है। मैंने टोटल नाम देके एंटर किया, ये पूरे रो का नाम टोटल हो गया। यहाँ पे मैं गया, मैंने इक्वल टू लिखा, सम किया एंड यहाँ पे जाके मैंने टोटल डाला, ब्रैकेट क्लोज किया, वो रेंज सिलेक्ट हो गया। तो मुझे ये पता चल गया कि उसका वो करेक्ट चल रहा है, क्योंकि वो जी। हाईलाइट हो जाता है। हाँ। एंटर दबाने पे आपको वो आंसर आ गया। आंसर आ गया। सिमिलरली आप अगर वो सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कि उसका नाम है 143। मैं सम उसका 143 है और यहाँ पे आंसर भी अपना 143 आ चुका है। ओके सर। ठीक है। Got ये it. समझ में आ गया। जी सर। हाँ। अब यही सेम चीज अगर आप दूसरे शीट में भी जाके करोगे, अपन अभी ये शीट में थे, अगर अपन ने यहाँ गए और अपन ने को अगर लगा कि सपोज मुझे राइस एक दुकान में बिक रहा है, वो पूरे राइस का टोटल कितना आया था ये मेरे को कोई और शीट में अगर चाहिए होगा, और मैंने वो पूरे राइस के सारे नंबर्स का नाम राइस दिया होगा, तो मैं यहाँ आके बस इज इक्वल टू दबाऊंगा। अभी मैंने रेंज का नाम नंबर्स दिया था, नंबर्स। तो मैंने सम करके यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख लिया। ठीक है। और नंबर्स लिख के मैंने ये क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया, तो वो वहां से डेटा लेके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो दिस इज बेसिकली ये नेमिंग का अपने को फायदा हो जाता है। ये naming which works only on one particular Excel file but with different sheets, यस यस। but not with two different files. टू डिफरेंट फाइल्स इट वोंट वर्क। Okay. यस। अभी आपने नेमिंग किया था कॉलम में, अगर इन केस इफ आई ऐड वन मोर कॉलम समवेयर इन बिटवीन, इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्ट? सपोज लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? इफ यहाँ पे एक कॉलम है पूरा, ठीक है। करेक्ट, इसमें बीच में कोई एक रो मैंने एक और ऐड करना पड़ा मुझे, हाँ, तो इन अगर दैट अपने केस हाँ, अगर अब तो ये हो जाएगा कि यहाँ से अगर सपोज मैं ये नंबर हटा दिया तो वो अपने आप वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपने सपोज एक इंसर्ट किया सेल, ठीक है, इंसर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा 250, ठीक है, एंटर दबाया, तो वो उतने ही रेंज का नंबर लेगा जहां तक उसका नाम नंबर्स है। ठीक है। जहां तक मैंने रेंज, वो रेंज को मैंने नाम दिया था। ठीक है। okay, indirectly we are giving the range for the particular cell, not to the value. नो, व्हेनेवर यू ऐड द थिंग, वो रेंज भी इंक्रीज हो गया है। देखो आपने आपने अगर ये सिलेक्ट कर दिया पूरा, तो वो रेंज के बीच में जो सेल आया है उसको भी वो रेंज एक एक से बढ़ गया। इफ यू कैन सी, पहले तक बस एक सेल, अगर ये सेल नहीं था पहले, करेक्ट? हेलो। हाँ हाँ यार, सुन रहा हाँ हूँ या हाँ। तो पहले अपने पास सपोज ये कितने इसका काउंट है 17, पहले 16 करेक्ट ही था। पर जब करेक्ट, अपन ने एक इंसर्ट किया रेंज के बीच में सेल, तो वो रेंज भी एक्सटेंड हो जाता है, 17 का काउंट आ गया। सी, okay, द and the रेंज का total नाम is नंबर्स, and the total is for also 17 नंबर्स। 70 numbers. ओके। और सर हमने अगर उधर गैप दे दिया तो वो करेगा कैसे टोटल? हाँ, अगर अपन ने यहाँ पे अगर डिलीट कर दिया तो वो हाँ। टोटल चेंज हो जाएगा। नॉट ओनली ऑन दिस शीट, बट जहाँ पे अपन ने उसको कॉल किया है वहां सब जगह वो चेंज हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे नंबर्स का सम किया था, वो यहाँ पे भी चेंज हो गया। ठीक है।
ठीक है, डाउट्स Okay. क्लियर हो Okay. गए? Yes, yes. क्लियर Clear. सर क्लियर। क्लियर है ना? आप एक बार ट्राई करके देखिए ये सब कुछ वहां पे अपने एरिया में। जी सर। हैंड्स ऑन करना बहुत जरूरी है। आप खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ 5-10 मिनट एवरी फंक्शन के बाद, आप एक बार ट्राई कर लेना प्लीज, ठीक है? और तुरंत कुछ डाउट आएगा तो मुझे बता देना। तो अपना ये वाला पार्ट हो चुका है। लाइक वी हैव क्लियर्ड फ्रीजिंग पैन्स, we have cleared how to do that. We go to view tab, we go to freeze pans, and then we click on split. We have covered split as well. Naming a cell we have covered. We have covered naming a range of cells. We have covered naming multiple single cells. We have covered formulas that span multiple sheets, which is what I showed you.